بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم my dear first year students. Today we are going to read the poem Sindhi Woman by John Stallworthy. First of all, we will read about the author. John Stallworthy, born in 1935 and died in 2014. He was born in London. He was an editor, literary critic, and poet. He got his education at Dragon School, Rugby School, and Oxford School. He won Newdigate Poetry Prize while playing rugby at the university. He was a fellow of the British Academy and the Royal Society of Literature. His collection of poems are mostly in the traditional forms of examination of war. His several volumes of poetry, including Rounding the Horn, collected poems, body language, and survivors' song, were published. The main idea of this poem is it's a tribute to work. A Sindhi woman is walking barefoot through the bazaar. There is rhythm in her walk. She is carrying a jar on her head. Still, there is no ripple in her movement. She walks over stones, refuse, garbage, and crumbs. The poet concludes that only those can keep their heads high who learn to walk under weight. He is impressed by her graceful walk and hard work. इस पोइम में बेटा जिस सिंधी वुमेन का ज़िक्र है उसमें जॉन स्टॉल्सवर्दी जो एक फॉरेनर है और सिंधी वुमेन एज वी बिलोंग टू पाकिस्तान एंड सिंध इज़ आवर कल्चर एंड सिंधी वुमेन आर हेयर और वो उससे बड़ा इंस्पायर होता है कि उसने सर पे मटका या जार उठाया हुआ है और जार किस चीज़ को डिपिक्ट करता है कि वो उसका टारगेट है जार को उसने पानी भर के लेकर जाना है, मंजिल तक पहुंचाना है. अब जब मंजिल उसके सामने है तो शी इज़ वेरी डिटर्मिन्ड, उसका इरादा बड़ा मुसम्मिम है. उसको अब इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं कि उसके पाँव के नीचे क्रम्प्स आते हैं, गारबेज आता है या एरिया स्लम है या उसने कहाँ से गुज़रना है. और इससे भी बढ़कर पॉवर्टी भी उसके सामने कुछ नहीं है. गुर्बत जो है वो भी उसके लिए मैटर नहीं करती क्योंकि गुर्बत को भी वो पसे पुश डाल देती है. और गुर्बत उसकी किस चीज़ से डिपिक्ट होती है कि एज शी इज़ बेयर फुटेड, नंगे पाँव हैं, यानी उसके पास कुछ भी नहीं है, गरीब है वो और सर पे उसने जार उठाया हुआ है और उसका मूवमेंट जो है, जो उसकी वॉक है, उसके अंदर कोई रिपल नहीं है, कोई इरताश नहीं है, कोई लग्जश नहीं है. ठीक है. और वो बड़े ख़ूबसूरत अंदाज से चले जा रही है, हर चीज़ को पीछे छोड़ते हुए. अब शायर जो है, पोइट जो है, ये जॉन स्टॉल्सवर्दी, वो इससे ये नतीजा अख्ज़ करता है कि अगर इंसान ने अपना इरादा कर लिया है और मंजिल तक पहुंचना है और मंजिल तक पहुंचने के लिए वो वज़न उठाना सीख जाता है. वज़न उठाने से मुराद यहाँ पर ये है कि अगर वो चैलेंजेस को फेस करना सीख जाता है तो फिर उसके लिए रास्ता चाहे कैसा भी हो, हालात यानी कि वो जो बेयर फुटेड है, पाँव में जो उसका जूता नहीं है, हालात उसके चाहे कैसे भी हों, उनका सर जो है वो हाई ही रहता है और वो बड़े इत्मीनान के साथ अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचते हैं. Now let's start the poem. A Sindhi Woman by John Stolzworthy. Barefoot through the bazaar and with the same undulant grace as the cloth blown back from her face, she glides with a stone jar high on her head and not a ripple in her tread.
डिफ़िकल्ट वर्ड्स। बेयर, बेयर कहते हैं नंगे को, एक्सपोज्ड, नेकेड। अंडुलेंट, लहराती हुई, मूव लाइक मोशन और लुक। ग्रेस, चाल, मैनर। ब्लोन, लहराना, हटाना, मूव विद एयर। ग्लाइड, मूव स्मूथली, रवानी से चलना। जार, मर्तमान। रिपल, विविंग यानी स्टैगरिंग, लड़खड़ाहट। ट्रीड, चाल, फुटस्टेप्स, गेट। नाउ barefoot, नंगे पाँव, थ्रू द बाजार, बाजार में से, एंड विद द सेम अंडुलेंट ग्रेस, और उसी लहराती हुई चाल के साथ, एज द क्लोथ ब्लोन बैक फ्रॉम हर फेस, एज जैसा कि कपड़ा भी जो है वो उड़कर उसके चेहरे से हट जाता है। शी ग्लाइड्स विद द स्टोन जार, वो पत्थर के मर्तबान के साथ रवानी से चलती है। हाई ऑन हर हेड, और जो मर्तमान है वो कहाँ है, अपने सर पर बुलंद रखे हुए। एंड नॉट रिपल इन हर ट्रीड, और उसकी चाल में कोई लड़खड़ाहट नहीं है। नाउ द रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। रेफरेंस इज these lines occur in the poem A Sindhi Woman, composed by John Stolzworthy. Context: the poem is a beautiful description of a Sindhi woman walking through the bazaar. She is walking gracefully. The poet is impressed by the gait. Explanation: the poet seems to be impressed by the graceful gait of the Sindhi woman. She is going through the bazaar barefoot. She is observing. The wind removes the cloth from her face and her beauty is shown out. She is carrying a stone jar on her head and promenades through the bazaar. She does not show even a single ripple in her walk. The poem is a tribute to work. Work keeps man active, whereas idleness causes man's decay. The poem incites us to work and devotedly in all circumstances. It depicts pitiable conditions of a Sindhi woman, but there is dignity and grace in her walk. She faces all hurdles heavily with a smiling face. She stands strong and straight. The rhyme scheme used is ABBACC. Now the second stanza, watching her cross erect. Watching her, देख रहा हूँ मैं उसे, क्रॉस इरेक्ट, उसको सीधी चलते हुए, इरेक्ट सीधी, क्रॉस चलते हुए। स्टोन्स, गार्बेज, एक्सक्रीमेंट एंड क्रम्स, पत्थर, गार्बेज कूड़ा क्रिकेट, एक्सक्रीमेंट फुजला, एंड क्रम्स और टुकड़ों पर से। ऑफ ग्लास इन द कराची स्लम्स, और शीशे के टुकड़ों पर से, इन द कराची स्लम्स, कराची के स्लम्स एरिया में से। कराची के कौन से एरियाज़ में से, यानी कच्ची बहुत बुरा हाल जो बस्तियाँ होती हैं उनको, यानी पूरे एरिया जो होता है, या स्ट्रीट ऑफ स्मॉल हाउसेस या फिल्थी लेन्स, बहुत गंदे, उन एरियाज़ में से। आई विद माई स्टूप रिफ्लेक्ट, आई यानी मैं अपनी झुकी झुकी चाल के साथ, उसको इरेक्ट कहता है, अपनी चाल को स्टूप कहता है। झुकी झुकी चाल के साथ रिफ्लेक्ट, सोचता हूँ, यानी मेरे जहन में अकल आई है या मुझे समझ आई है। दिस स्टैंड मोस्ट स्ट्रेट, वो लोग सीधे खड़े होते हैं। हु लर्न टू वॉक, जो सीख जाते हैं चलना। beneath a weight, किसी मकसद के नीचे, मकसद के नीचे किसी वज़न के, यहाँ वज़न लफ्ज़ी तर्जमा, लेकिन यहाँ पर जो इसमें लेसन हमें मिलेगा वो ये है कि अपने मकसद के नीचे। रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट, राइट, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम A Sindhi Woman by John Stolzworthy, and context is the same as I have discussed already. And explanation: in these lines the poet paints a picture of a woman who is going through the slums of Karachi.
He says that he is watching a Sindhi woman crossing the stones, garbage, refuse, and piece of glass in the Karachi slums, going barefoot. Nothing can hinder or disturb her upright and straight. The poet meditates and sees his own body bent by the time, while the woman walks straight without any ripple. He concludes that those who learn to walk under the weight can keep their heads high. Only such people can face the hardships of life. The poem is a tribute to work. Work keeps men active, whereas idleness causes man's decay. Very soon, the poem incites us to work and devotedly in all circumstances. It depicts pitiable conditions of a Sindhi woman, but there is dignity and grace in her walk. She faces all hurdles, all obstacles, all the things that are on her way bravely with a smiling face. She stands strong and straight. The rhyme scheme used is A B B A C C. Okay, beta. Allah Hafiz.